S21 FE पहले सिंगल लाइन थी, अब इसमें डबल लाइन जो है वो आ चुकी है। भाई ये मेरा S21 FE है, ग्रीन लाइन आ गया है। ग्रीन लाइन This green line display line ये आ गया। Hey guys, this is my Samsung Galaxy S21 FE and it has the line issue. This happened after the May 2024 update. Now look at this. This is Samsung Galaxy tube light. I think it's a S21 FE. Seriously? My old Samsung A30 got stolen and I somehow survived 5 months without a phone. Now during that time I kept saving money and after a lot of research I finally bought the Samsung S21 FE. At first it felt amazing to use, but after 1.5 years things went wrong. I started facing a white line issue on the display right after the June security patch update. Honestly, it's feel like disgusting and frustrating, especially as a flagship user. I went to the service center with my S21 FE and the service center took bunch of photos of my S21 FE. And they said if everything is fine, they will change the display at a free of cost. A few hours later, they called me and said, your device not eligible for free screen replacement. I was shocked at this moment. The question is, why was my request refused? I will tell you everything, but first, let me say this. This video is very important for Samsung and any other Android users. Watch till the end and you will understand the entire situation. So, Samsung Service Center flat out refused my free screen replacement just because of tiny dent. And right there, a bunch of questions started flooding my mind. The very first one was, is that scratch or dent even causing this annoying white line on my display? The answer, absolutely not. I bought this device in October 2023 and just 3 months later, it got scratched by a bicycle key while both were in my pocket. Then after 15 months, a white line appeared on the screen right after the June 2025 security patch update. So the reason they gave for denying the free screen replacement completely baseless. At that moment, my curiosity exploded. I asked myself one burning question. How many of us are actually dealing with this same issue? The answer blew my mind. Countless Samsung S21 FE users are posting same issue on Facebook and Twitter about the exact same white line problem. But that's not all. During my research, I uncovered something shocking. Some YouTubers actually got free screen replacement despite having dents on their frame. Can you believe that? If you don't, just watch this. या इसके बाद आप देख सकते हो मैंने हाथों पर भी लिया। इसको लेने के बाद मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो हमारा वही डेंट था। भाई मेरे में डेंट था, बड़ा सा डेंट था। मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता बट मेरे में तो बड़े बड़े डेंट पड़े थे। मुझे कुछ नहीं बोला गया, लेकिन आप क्यों ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। बट मैंने बताया 1000 लाइक कंप्लीट करोगे तो मैं उस बंदे के लिए बात करूंगा कंपनी से फोन कॉल में। अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करते हो, डीएम करते हो, तो मैं इस इशू को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। फिलहाल ये जो पार्ट है ये बदला गया है, मैंने उनको फिर रिटर्न दे दिया। फिर मैंने फ़ोन को देखा कि हाँ भाई ये हमारा फ़ोन है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम किया इन लोगों ने। फिर मैंने जब चेक किया तो यहाँ पर 2 लाइन आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने सर्विस सेंटर में जाके दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने अच्छे से चेक किया तो मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का जो सिम ट्रे है वहाँ पर एक छोटा सा स्क्रैच देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये आपके हाथ से गिरा है? तो मैंने बोला कि रिसेंटली अभी कुछ नहीं गिरा है। जब ये फ़ोन मैंने ख़रीदा था तो यहाँ पर मेरे हाथ से गिरा था एक बार, तो उसी से ये वाला स्क्रैच आया। तो उन्होंने कहा कि ये आपको अगर स्क्रीन रिप्लेस करना है तो आपको पे करना होगा। मैं उतना ज़्यादा आर्ग्यू करने नहीं गया क्योंकि यहाँ पर मेरा जो सिम ट्रे है वहाँ पर छोटा सा एक स्क्रैच देखने को मिल रहा है और सैमसंग आपका जो डिस्प्ले चेंज करके देगा जब आपका डिवाइस मिंट कंडीशन में होगा, जैसे कि कोई भी स्क्रैचेस वैचेस कुछ नहीं है, तभी आपका डिस्प्ले चेंज करके देगा। सो है गाइस, तो मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है
आपको सबको तो पता ही होगा उसमें ग्रीन लाइन इशू आया था। तो एक सर्विस सेंटर में मैंने जाके दिखाया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सिम ट्रे के पास एक छोटा सा स्क्रैच देखने को मिल रहा है, इसलिए वो फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट करके नहीं देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे जिनका कमेंट्स आ रहा था कि मैं दूसरा एक सर्विस सेंटर ट्राई करूँ। तो मैंने आपका बात सुन के दूसरा एक सर्विस सेंटर जाके ट्राई किया, तो वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये मेरा S21 FE है एंड इसमें ग्रीन लाइन आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। इनका कहना है कि ये सॉफ्टवेयर इशू है एंड ये कह रहे हैं कि ये डेंट की वजह से स्क्रीन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। मतलब मानते हैं ना कि सॉफ्टवेयर इशू है, तो सब जानता है, दुनिया जानती है। पार्ट में डेंट या स्क्रैच नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मेरे डिस्प्ले में कोई डेंट तो नहीं है, मगर डिस्प्ले का पार्ट फ्रेम भी कंसीडर होता है, इसीलिए जो फ्रेम में स्क्रैच है उसको वो लोग डिस्प्ले का स्क्रैच या डेंट समझ रहे हैं। मतलब भाई कोई सेंस है इस बात का? इसमें ग्रीन लाइन आ गया है, इसलिए हम इसको नहीं करें। ये वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें मैं अपने S21 FE के ग्रीन लाइन इशू को सर्विस सेंटर पर ले गया था एंड वहाँ वो लोग बोले कि ये लाइन सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से आया है एंड आपका डिस्प्ले वारंटी में है, फिर भी आपके डिस्प्ले को फ्री में रिप्लेस नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके फोन के साइड फ्रेम में छोटा सा डेंट है। इस बात का कोई लॉजिक था नहीं भाई, बट फिर भी 1 महीने के मेहनत के बाद उन लोगों को मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम समझ में आई एंड वो लोग डिस्प्ले को फ्री में रिप्लेस कर दिए। बट ये चीज हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले मैंने अपने लंबे चौड़े प्रॉब्लम को ट्वीट किया, वहाँ सैमसंग का ऑफिशियल रिप्लाई आया एंड 2-3 दिन बाद कॉल आया, और फिर भी दोस्तों वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे और ना ही मैं था। ऐसे करते करते दोस्तों आखिरकार 25 दिनों बाद मेरी प्रॉब्लम एक सैमसंग के सीनियर हेड को समझ आ गई एंड वो मेरे डिस्प्ले को बनवा दिए फ्री में। I have already shown you videos from multiple YouTubers to prove my point. Now I want to give a piece of advice to Samsung, especially Samsung India. If you think that a tiny dent is enough reason for deny a display replacement, then maybe you should stop making this kind of AMOLED displays. Because yes, they look good in short term, but in reality, they clearly suffer from serious quality control issues, and the same goes for your software updates as well. My friends, you must share this video. Share it for yourself because so many people are suffering from the same issue. Look closely. This is not our fault. It's the company's fault. Samsung, as a tech giant, we expect better from you. But honestly, right now, it's becoming very hard for me to trust you. I will be visiting another service center, and whatever happens next, I will share that with you as well. That's my take. Let me know yours in the comment section below. Jai Hind, Vande Mataram. See ya.